तो चलिए अब हम आते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स पर। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स होते क्या हैं? सो जॉइंट प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव अ प्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, बट उसके साथ साथ वी ऑल्सो गेट बटर मिल्क। सो दीज बिकम जॉइंट प्रोडक्ट्स। नाउ जॉइंट प्रोडक्ट्स होने के लिए एक कंडीशन नेसेसरी है दैट बोथ ऑफ देम शुड हैव good economic value. If one of the product is not having very good economic value, then it will be considered as a byproduct. Okay, so coming to joint products, standard ये कहता है कि if you are able to identify the cost of joint products separately, then you can allocate the cost separately. But in case if you are not able to identify the cost separately, for example in this case, अब मिल्क का कॉस्ट कर्ड और बटर मिल्क में कैसे डांटे, राइट? तो यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई सेपरेट कॉस्ट कि कितना मिल्क कर्ड में लगा और कितना मिल्क बटर मिल्क में लगा, करेक्ट? सो इन दैट केस व्हाट स्टैंडर्ड सेज इज दैट allocate the cost on a रैशनल बेसिस। आपको एक रैशनल बेसिस में allocate करना पड़ेगा। अब ये रैशनल बेसिस क्या होता है? रैशनल बेसिस ये होता है दैट यू allocate the cost based on the relative selling prices of the joint products। ठीक है, तो अभी सपोज कर्ड का सेलिंग प्राइस 100 है और बटर मिल्क का सेलिंग प्राइस है 300। सो इन दिस केस वी विल allocate the cost of the raw material in the relative selling prices of कर्ड एंड बटर मिल्क। तो यहाँ हमने किया है 100 इंटू 100/400, 300 प्लस 100, एंड बटर मिल्क के लिए अगेन 100 इंटू 300/400, which comes to 25 and 75, which we will be allocating to curd and buttermilk respectively। ठीक है, नाउ कम्स बाई प्रोडक्ट। हमने बोला था बाई प्रोडक्ट क्या होता है? बाई प्रोडक्ट इज समथिंग विच हैज a lower economic value or almost no economic value when in a production process। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें बटर मिला एज अ बाई प्रोडक्ट विच हैज अ लोअर इकोनॉमिक वैल्यू, assuming a lower economic value। तो in that case what standard says is that this selling price of butter of 40 will be reduced from the cost of milk 100 to arrive at the net cost, which will then be bifurcated between curd and buttermilk in their respective selling price। Understood?